So let's start with lecture C of kinetics. Right. So last time I had told you about the case one. Case one is when acceleration is zero, and in this case the velocity is constant, and if velocity is constant, then displacement is equal to speed into time. Distance is equal to speed into time. कैसे भी आप लिखना चाहो right? And this is because of the fact that we were using the definition of acceleration, velocity, and position, right? So basically, since we are in one dimension, we will say that x is equal to ct, right? Where v can be positive or negative depending on the direction. We also talked about the other case when acceleration is constant and is equal to a naught. Please notice that I'm not writing the vector sign on top because we are in one dimension, but I do mean that vector sign. Vector sign है वहाँ पे, और ये जो vector sign है वहाँ पे, इसका मतलब ये हुआ that acceleration will be defined when आवाज ही नहीं आ रही है क्या हो सकता है डिवाइस आने वाला है माइक कहाँ है हेलो तो मैंने माइक पे बोला कि नहीं बोला हेलो if the voice is not very clear then you can just log in and log out, right? Maybe that will help. So case 2 was when acceleration is constant, right? Acceleration is a constant vector, right? This means that we are talking about the value of dt by dt being equal to constant, right? And we saw that the consequence of this is that the velocity vector is equal to initial velocity vector plus acceleration vector into time, right? But since we are working in one dimension, we forgo the arrows on top and we just write v is equal to u plus at. Remembering that v and u and a, they can all be either plus or minus, they can change sign. Acceleration cannot change sign because it is constant, but v and u, they can change sign. The only scalar in this equation is t. And then we saw s is equal to ut plus half a naught t square, right? Now remember that s is also a vector quantity. So here we must have s, b, a, s, be positive and negative. S is equal to ut plus half a naught t square, right? And then we can substitute the first equation into the second equation. And if we substitute the first equation into second equation, what I'm going to do is I'm going to write down T is equal to V minus U upon A. And I'm going to substitute this. S will be equal to U into V minus U upon A plus half A naught
into b minus u upon a naught whole square. And if you do this, you will find that audio नहीं आ रहा मेरा कनेक्शन गड़बड़ अच्छा एक मिनट रुको no there is no third noise अच्छा let me log out and log in okay I'll log out and log in ब्लूटूथ है ही नहीं रुको मैं लॉग आउट करके लॉग इन करता हूँ ईयरफोन भी नहीं है मैं लॉग आउट करके लॉग इन कर रहा हूँ तो स्टाइलस का नॉइज अचानक से धुएं आने लगेगा टीना मैम टीना मैम
हाँ जी सर। हाँ जी हाँ जी। आई होप अभी आवाज आ रही है, मैंने रिस्टार्ट कर दिया है। अभी आवाज आ रही है तो just type in क्लिकिंग नॉइज कहाँ से आ रही है मुझे बहुत कम आ रही है। सारा तो वॉल्यूम को बढ़ा, मैं अपना नहीं चिल्लाऊंगा यहाँ पे। हाँ, so we had done those two cases, and if you were to substitute, जो मैंने अभी किया था, you would get that b square is equal to u square plus 2a. There is another equation which you may or may not have seen, and it is again, if you substitute the first equation into the second equation, but this time instead of substituting the value of t, which was v minus u by a, now you substitute the value of a, and you put a is equal to v minus u by t, and you substitute this into the second equation, and you will get s is equal to u plus v by 2 into t. Right, now these are the four equations that we are going to be working with, and these four equations are अरे क्या करवाइए अपने ऑडियो का भी, अभी मैं क्या करवाऊँ, अभी सुबह सुबह क्या करूँ, काफी बैकग्राउंड नॉइज आ रही है, ऑफ कर दूँ सब। हाँ, अब क्या है, अभी भी आ रही है बैकग्राउंड। Nobody is tapping on the mic, मेरे पास। अजीब आवाज क्या होता है भाई इसका, मतलब क्या, मतलब वेरी स्लो, ऐसी आवाज आ रही है क्या? नहीं, यहाँ पे कुछ, मैंने पंखा भी ऑफ कर दिया भाई। देखो मैं दूसरे डिवाइस पे जा, फिर से
and then here you have no appearance of v, then you have no appearance of t, and you have no appearance of a, right? So these are the four equations that we are going to use. Remember that SV derive किया था ना, मैंने बोला ना क्या substitute करना है. Class 9 में पढ़ाया गया हुआ. Yes, absolutely. So what you have to understand is that these equations will only stand if the acceleration is constant. भूल गया यहाँ पे लिखना, but I should always be a naught. I should also write u naught because u is also constant. So you already know how to use these equations, right? I'll give you one question first, and then we'll discuss how to apply these equations. Question number 1. So we have particle crosses the origin at t is equal to 0 with velocity plus 20 meters per second. Right? It is moving along the x-axis. Along x-axis. If a is equal to minus 5 meter per second from t is equal to 0, find velocity meter per second square. Find velocity when it crosses the origin again. ये एक्सेलरेशन की वैल्यू शायद मैंने थोड़ी गड़बड़ दे दी है, -2 लेके चलो, -2 मीटर. This is an extremely easy question. There is no trick here. It's a straightforward question. Velocity 20 seconds नहीं हो सकता है ना पार. Find the velocity when it crosses the origin again. हाँ, अब सही लिखा ना. अब ना वो गलत आंसर है. Sonal, this is wrong answer. हार्दिक गलत आंसर. और यूनिट कौन लिखेगा? शौनक के करेक्ट आंसर.
नहीं, ये गलत आंसर। दो जर्नी है, क्या मतलब है दो जर्नी? सो हाउ टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स? If possible, you should draw a diagram, right? And just plot. Diagram पे कुछ करना नहीं है, केवल plot करना है। T is equal to 0 पे particle यहाँ है, और इसकी velocity जो है वो +20 है। मैं units नहीं लिख रहा हूँ अभी। And acceleration is equal to -2, right? So the key of solving these questions, most important part of solving these questions, is that you have to realize of initial and final points. Okay. Now I told you when we were discussing the definitions, the various definitions that were going to describe motion, I told you that there is a set of definitions which is looking at the overall motion of the particle. Right? I told you that we are having a set of definitions. We are looking at the overall motion of the particle. Then there was a set of definitions that is looking at the minute detail of the motion. So the variables which are describing the overall motion of the particle are displacement, average velocity, and average acceleration. The variables which are describing the motion in great detail are the velocity and acceleration vectors, right? And somewhere in between is the distance, the distance parameter. Now what happens in motion in one dimension is that things get slightly mixed up, and they get mixed up because of the simple fact that the four equations that we have at our disposal contain instantaneous velocity, but at the same time they contain displacement, right? Remember, there should never be any ambiguity in your mind about this, that S is the displacement vector. Although मैंने ऊपर एक arrow नहीं बनाई है, still it is the displacement vector. Okay. So these equations of motions ultimately end up describing the overall picture, although they do contain the minute details of motion. You can extract the minute details of motion, as we will do in a moment, but you must also be aware of the overall picture जहां पे हम ये equations को apply कर रहे हैं. Therefore, these equations of motion cannot be applied if you are not aware of the initial and final points of motion. That means that these equations are always applied between 2 points in space. Okay, and you must be aware of the 2 points in space. ये motion शुरू कहाँ से हुआ, ये motion खत्म कहाँ पे हो रहा है. Although please remember कि जब मैं words शुरू और खत्म use करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि उससे पहले कुछ नहीं हो रहा था और खत्म होने के बाद कुछ नहीं होगा. शुरू का मतलब t is equal to 0, खत्म का मतलब
whatever final value of time that I am telling you, or whatever final position that I am telling you. Right? So please remember that we must be in a position to understand the initial and final position before we can apply the equations of motion. So before you put your pen on paper, before you actually write down the equation of motion क्या होने वाला है, आपको initial और final position का knowledge होना चाहिए. Right? So let's go back to this question. If this is the initial position, then according to the question, where is the final position? And according to the question, where is the final position? The final position is again at the origin, because the question is asking me find the velocity of the particle when we are back at the origin. So this must be the final position as well. And if this is the initial position as well as the final position, then this tells me that for the given part or the snippet of motion, S is equal to 0, A is equal to minus 2, this is given, U is equal to plus 20, this is given, and they are asking for the value of V, right? So V square is equal to U square plus 2AS. This is what I'm going to apply. But V square is equal to U square plus 0. Right? S is 0. हाँ, ये सबको समझ में आना चाहिए. समझ में आया ये कि S 0 है. अगर ये में आ रहा है तो you must raise your hand and ask me. Otherwise, V is equal to U plus 80 भी लगा सकते हैं, but वो redundant है. आपको स्कूल से घर जाना है, तो obvious सी बात है कि आप via Uran नहीं जाओगे ना. I mean, you can, of course, the road goes to Uran and then you can come back to your home. But you will not do that because you will take the shortest path possible, right? So here also you can apply V is equal to U plus 80. You can apply, बिल्कुल आप apply कर सकते हैं, लेकिन फिर T निकालना पड़ेगा, है ना? So everybody is understanding why displacement is 0. Everybody is understanding why displacement is 0. Yes. Okay. So V square is equal to 20 square, और V square is equal to 20 square का solution क्या होएगा? V is equal to plus minus 20 meters per second. Right now we have to define. आंसर सेम आएगा भाई, आंसर तो सेम ही आएगा ना. अब स्कूल से घर जा रहे हो तो पहुंचोगे तो घर ही ना, वाया उड़न जाओगे तो answer will be same, but the time taken will be greater. And as you will realize in physics, we must approach the problem in such a way that, unfortunately, this is unfortunate, right? I don't like this. I don't like to say this, but we must we must approach the problem in such a way that it takes us a minimum amount of time. T is equal to 0 दिया है क्वेश्चन में? कहाँ दिया है भाई क्वेश्चन में? T at T is equal to 0 दिया है ना? टाइम इंटरवल नहीं दिया है ना जहां से वो वापस आ जा रहा है. ओके, सो V is equal to plus minus 20 मीटर पर सेकेंड. इसमें एक आंसर सही होना चाहिए, एक आंसर गलत होना चाहिए. तो द आंसर विल बी V is equal to
minus 20 meters per second. Right? V will be minus 20. It cannot be plus 20. Okay, chalo. Next. So this is the second part of the same question. माइनस इसलिए होएगा क्योंकि एक्सेलरेशन माइनस था ना. एक्सेलरेशन माइनस था, इसका मतलब क्या हुआ? एक्सेलरेशन माइनस था, इसका क्या मतलब हुआ? कैसा मोशन हुआ पार्टिकल का? पार्टिकल का मोशन ऐसा हुआ, ऐसे ये पार्टिकल गया और ये पार्टिकल. इस पे और डिटेल में अभी हम बनाएंगे, डिस्कस करेंगे. हाँ, डायरेक्शन टुवर्ड्स नेगेटिव है. चलो, सेम क्वेश्चन. Same as 1, but A is equal to plus 2 meter per second square. And after traveling after traveling after traveling 100 meters, acceleration is reversed. Find velocity when particle reaches सर मुझे लास्ट प्रॉब्लम में एक डाउट है. मुझे लास्ट प्रॉब्लम में एक डाउट है. जरा पीछे के स्लाइड में फिर से बोलो. अनम्यूट हो गया, म्यूट हो गया क्या? नहीं सर, म्यूट मैं अनम्यूट ही हूँ. सर अनम्यूट ही हूँ मैं. मुझे नहीं सुनाई दे रहा है. अब समझ में आया. जोर से बोल. सर लास्ट प्रॉब्लम में मुझे एक डाउट है. आई कैन नॉट हियर यू नो. सर मैं टाइप करके बताऊं? कॉल वॉल्यूम सब कुछ इंक्रीज है. हाँ. सर मैं टाइप करके बताऊं? नो, एक मिनट रुक. फिर से हैंड रेज कर. रेज योर हैंड वंस अगेन. कहाँ गया वेदांत? मैं तो खोज नहीं पाऊंगा भैया इसमें. हाँ हाँ, बोल. सर मुझे लास्ट प्रॉब्लम में एक डाउट है. तेरी आवाज नहीं आ रही है. हेलो सर. ना भैया, आवाज नहीं आ रही. किसी को आ रही है आवाज वेदांत की? एनीबॉडी कैन हियर वेदांत? है पार्थ, तेरे को सुनाई दे रहा है? मुझे क्यों नहीं सुनाई दे रहा है? क्या है ये? ओनली आई कैन नॉट हियर. अबे वॉल्यूम फुल है, बकवास ना करो. रिंगटोन भी फुल कर दो क्या? सब फुल है वॉल्यूम. हेलो सर, आ रही है आवाज?
हाँ वेदांत, अब आया तेरा आवाज, फिर से बोलो। हाँ सर, मुझे लास्ट प्रॉब्लम में एक डाउट है। आप बता। सर जाओ ना आप पीछे के स्लाइड पे। हाँ सर आपने s को 0 डाल दिया, बट अगर फिर तो हम लोग एक ही कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं, फिर भी सेम ही आंसर आएगा। हाँ तो फिर हम लोग कुछ भी डालेंगे तो सेम ही आंसर आएगा, एक ही हाँ। वैल्यू। So basically, the final velocity is independent of acceleration. The acceleration could have been -2, it could have been -g. जब आप किसी चीज को ऊपर फेंकते हो, बॉल को ऊपर फेंकते हो, तो बॉल वापस आती है आपके हाथ में, तो क्या वेलोसिटी होती है बॉल की? सेम ही होती है। मतलब वेलोसिटी सेम नहीं होती है, स्पीड सेम होती है, वेलोसिटी तो ऑपोजिट हो हाँ, जाती है स्पीड ना। सेम होती है। अब ग्रेविटी से कोई फर्क पड़ा उस पे, मतलब ग्रेविटी की वैल्यू से कोई फर्क पड़ा उसमें? नहीं। Whether you are standing on the moon or you are standing on the earth or you are standing on Jupiter, it will always come back with the same velocity, same speed and opposite velocity. It may take different times when you throw it on different planets, but when it comes back, its speed will be the same. हाँ ठीक है सर, समझ गया, थैंक यू सर। Okay. तो अपना हैंड लोअर कर ले अपने आप। हाँ, so we are doing this question now. So this question is the same as one, except that when नहीं, same answer नहीं है इसका राधे का। When the क्यों same नहीं होएगा? Question तो same है, तो same क्यों नहीं होएगा? Because somewhere in the middle the acceleration has been changed, and if acceleration is changed, then there is a problem. The problem is that the equations of motion hold between 2 points of motion of a particle when the acceleration of the particle between the 2 points of motion is constant. But if I were to change the acceleration at a point, that's it. अब ये equation of motion मैं इस point के beyond नहीं apply कर सकता हूँ. So let's go back and draw the diagram once again. So this is the x-axis along which motion is occurring. The motion starts from this point, goes along to this point, and here the acceleration has changed. And after that, maybe the motion goes along like this, and then like this. But the point is that along the red line and along the green line, acceleration of the motion is different. And therefore, while applying the equations of motion, it is not possible for me to take this as the initial point and this as the final point, or even this as the final point. I hope everybody is understanding this. You cannot take the crossed out points as the final points, because the crossed out final points are during a part of the motion where acceleration has changed, right? So where can I choose the final points? I can choose the final point here, no problem. यहाँ पे final point मैं choose कर सकता हूँ, कोई problem नहीं. मैं इधर initial point, second part of the motion का choose कर सकता हूँ, कोई problem नहीं. Okay, I'll write it I dash. Now I can choose f dash here, I can choose f dash here, I can choose f dash here. It will make no difference. This is absolutely correct, this is absolutely correct, this is absolutely correct. But if you were to choose the final point here,
or here or here, then this would be the wrong choice. Okay, please see the logic in what I'm saying. इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करने के लिए आपको दो पॉइंट चूज करने हैं, एक इनिशियल पॉइंट और एक फाइनल पॉइंट। इक्वेशन ऑफ मोशन की वैलिडिटी तभी है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। तो जो दो पॉइंट आप चूज करेंगे, इनिशियल एंड फाइनल, between these 2 points the acceleration of the object must remain constant. If you are choosing 2 points, initial and final, such that there is a change of acceleration at some point in between your chosen 2 points, then the equations of motion will fail, they will not work. Okay, the precondition of the equations of motion that we have derived is that acceleration must be constant. So you can choose I and F, no problems. You can choose I dash and any F dash, no problem. But you cannot choose I and F where I have drawn the cross. The yellow crosses जहाँ पे मैंने F के ऊपर बनाए हैं, वहाँ पे आप फाइनल पॉइंट नहीं चूज कर सकते हो अगर आपने इनिशियल पॉइंट को यहाँ पे चूज किया है तो। Is this clear to everyone? Is this clear to everyone? Anybody not understanding what I have said, please type no. Anybody not understanding what I have said, please type no. Initial and final points, अबिन क्या नहीं समझ में आया? Initial and final points of motion cannot be chosen between 2 points having different accelerations. हाँ, बोलो भाई अबिन। नहीं सर, समझ गया, बस आप ही बोला ना वो डिफरेंट एक्सेलरेशन। हाँ, हेलो हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ बोल ना। हाँ सर, मुझे एक्चुअली यही नहीं समझ आ रहा था, क्या आप बोलते हैं, ये अलग अलग आपने जो एफ क्रॉस किया है, हाँ, क्यों सर? हाँ जो एफ क्रॉस किया उसमें क्या हुआ? सर वहां पे एफ क्रॉस मतलब क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि रेड लाइन और ग्रीन लाइन में एक्सेलरेशन डिफरेंट है ना। ओके। यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना है? यहाँ पे एक्सेलरेशन +2 है और यहाँ पे एक्सेलरेशन -2 है। हाँ, -2 क्यों है? क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है that a is +2 but after traveling 100 meters acceleration is reversed. Acceleration is reversed का क्या मतलब हुआ? मतलब नेगेटिव हो गया। हाँ, उसका डायरेक्शन नेगेटिव हो गया। आया अभी समझ में? हाँ सर। Okay, so what we are going to do in questions like these, अभी deceleration word अभी हम use नहीं करेंगे। What we are going to do in questions like these is that we are going to divide the motion into 2 parts. We are going to divide the motion into 2 parts. How do I divide? How do I decide कि ये मैं motion को कहाँ से divide कर रहा हूँ? Very very simple. You just divide जहाँ से acceleration different हो गया। इस केस में मोशन को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट के लिए एक्सेलरेशन की वैल्यू होएगी +2 और दूसरे पार्ट के लिए एक्सेलरेशन की वैल्यू होएगी -2. Okay, so let's apply the equations of motion now for the first part of motion, right? For the first part, for the first क्या हो गया यार? अच्छा
for the first part of motion. So the first part is between I and F. U is equal to plus 20. Plus 2. Can anybody tell me the value of S? Can anybody tell me the value of S for the first part of motion? Well, all of you are right and wrong at the same time. एक ने बिल्कुल सही आंसर दिया. Yes, one person has given the very absolutely correct answer. S must be equal to plus 100. Okay, now why am I using this plus? We must be absolutely clear about this. Let me go back to the diagram. Why am I using plus 100? Well, displacement is equal to a vector drawn from the initial position to the final position. Right? Yes, Parth, absolutely right. So a vector drawn from the initial position to the final position. We have chosen the initial position as I. We have chosen the final position as F. So if I were to draw a vector from the initial position to the final position, I would get a vector having magnitude of 100 and a direction of plus I cap. Now, we have already decided in the last class that we are going to drop the I cap if we are dealing with one dimension. Therefore, the displacement of the particle must be plus 100. Now, this is different, slightly different from what you have learned, because as far as my experience tells me, when you learn these equations of motion in class 9th and 10th, then the idea of displacement as a vector is not quite as ingrained as maybe perhaps today. So therefore, you like to take displacement always as a positive quantity, right? Which is very wrong, which will have consequences while you are solving problems. It will give you weird results. It will give you wrong results. So we have to, apart from U, V, and A, we have to strictly treat S as a vector quantity. Therefore, you must always ask yourself before writing down whether this S is a positive or a negative quantity. Right? Remember that the positive quantity का मतलब ये नहीं होता है कि ये positive number है, और negative quantity का ये मतलब नहीं होगा कि ये negative number है. अगर S पॉजिटिव है इसका मतलब उसका डायरेक्शन प्लस आई कैप है, और अगर S को आप नेगेटिव लिख रहे हो उसका मतलब इस केस में उसका डायरेक्शन माइनस आई कैप. राइट? सो डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी टेकन विथ प्रॉपर साइन. That is very, very important. So if this is the case, if I know U, A, and S, then I can easily work out V, I can work out T. In this case, I am interested in finding the value of V. So V is equal to U square plus 2AS, right? That is 400 plus 400, that is equal to V square is equal to 800 meter per second. Right? Am I correct? ये सबने निकाला, ये है सही है, ये V square is equal to 800. Right? I will not find the value of V because I'm not going to find under root because, well, I can, but I'm not going to bother because of the fact that since this question has not asked for time, I have this instinct that time is not going to get involved, and if time is not involved, then it is
v square is equal to u square plus 2as is going to be used, right? So I'll just leave this as v square. Okay, now we come to the second part of motion, right? Okay, this may uh, this may get a little tricky, right? So going back to the diagram now, where is I dash and F dash? Well, I'm not going to choose F dash here, although it is correct. I'm not going to choose F dash here, although it is correct. I am going to choose F dash here. This is I dash. I dash happens to coincide with F. And this is F dash. So in the second part of motion, I am choosing I to be the initial point where the first part finished. But the final point that I am choosing is the origin. Why am I choosing the final point as the origin? Well, I'm choosing the final point as the origin because I'm choosing the final point as the origin because of the question. The question is asking me, tell me the velocity at the origin, right? Now you may be tempted, okay? You may be tempted to say, एक मिनट यहाँ पे तो एक और ये पॉइंट इंटरेस्टिंग दिखाई दे रहा है, यहाँ पे तो मेरे को वेलोसिटी 0 दिखाई दे रही है, या मुझे दिखाई कुछ भी दिखाई दे रहा है, right? But the whole thing that you have to realize, that you have to understand is that this point does not matter. This point does not matter, okay? You do not need to bother about this point. वहां पे वो पार्टिकल मुड़ा सीधा हुआ जो भी हुआ मुझे कोई मतलब नहीं है. As long as the acceleration along this whole path remains same, I can choose any 2 points in this path for application of equation of motion. I don't have to worry about the point where velocity has become 0 or it has become positive or it has become negative. कुछ भी हुआ मुझे कोई लेना देना नहीं, right? Therefore, like I said, that we are going to use these equations for V0. मैंने कहाँ लिखा है भाई खुशी, अभी कहाँ लिखा है? अच्छा, यहाँ पे V0 क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन को हमने रिवर्स कर दिया. अब अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है, so if you go to I'll tell you, एक minute. Yeah, if you go to page number 5 on lecture 3, right? If you go to page number 5 on lecture 3, so what I've done is I've drawn a very simple diagram, and this diagram is telling me what happens when we have different values of acceleration and velocity, right? Look at the first diagram. If you have positive velocity and negative acceleration, then the speed will decrease. If you have positive velocity and positive acceleration, the speed will increase. Similarly, if you have negative velocity and positive acceleration, speed will decrease. And if you have negative velocity and negative acceleration, the speed will increase, right? ये डायग्राम सबको दिखाई दे रहा है ना, पेज नंबर 5 पे जो मैंने डायग्राम बनाया. So this is a thumb rule that you are going to have to remember.
thumb rule is that same sign implies magnitude of V increases, opposite sign implies that magnitude of V decreases. Now, I would like to explain to you why this happens. To understand why this happens, we have to go back to our equation V is equal to U plus AT. Now, what does this equation tell us? This equation tells us that this quantity called final velocity is the vector sum of two vectors, U vector and A vector multiplied by A vector multiplied by a scalar called time. And we know what happens if you multiply a vector by a scalar. You don't do anything to the direction, you only change the magnitude, right? And this is doubly true here because we know that T is uh, 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 for the moment we'll take T as positive, right? T can be negative also, as we have seen, but we'll take T as positive. So this is how we interpret final velocity. Final velocity is the vector sum of two vectors. First vector is the initial velocity vector, which in our case is plus 20, right? This is the velocity vector. And the acceleration vector in the first case is plus 2, right? So basically, to find the velocity vector, you will end up adding the initial velocity vector to acceleration vector multiplied by time, right? And the net final velocity vector will be this. It has increased, right? So what is this vector? This vector is the U vector. And what is this vector? This vector is acceleration vector multiplied by time. And what is the red vector? The red vector is the V vector. In the same way, if the initial velocity is something and the acceleration is now opposite, so basically you will end up now adding two vectors, the velocity vector and the acceleration vector multiplied by time, but now they are opposite to each other. So the V vector will be like this. Of course, I hope you realize that there will be a value of time for which AT vector will become equal to the magnitude of AT vector will become equal to the magnitude of the U vector. And in that case, both the vectors will cancel out. So if we have the acceleration vector opposite to the initial velocity vector, then it is guaranteed that the magnitude of the final velocity vector will be less than the magnitude of the initial velocity vector. And at a particular moment in time, the magnitude of the velocity vector will become zero. Final velocity vector will become zero. What will happen beyond this? Well, time has not stopped. So time will keep on increasing. That means the length of this green vector will keep on increasing. And after final velocity vector becomes zero, the length of the green vector will be such that the green vector plus the blue vector will give you a velocity vector in this direction, right? So if acceleration and velocity are opposite to each other, then not only at some point of time the final velocity becomes zero, but after that point of time, the direction of velocity vector flips
And the moment the direction of velocity vector flips, the direction of the velocity vector and acceleration vector now become the same. Therefore, the velocity vector keeps on increasing, right? And you see this every day. Throw your pen up. As your pen moves up into the air, the gravitational acceleration vector and the velocity vectors with which you have thrown the pen are opposite to each other. Therefore, the final velocity vector of the pen keeps on decreasing until at the topmost point it becomes zero. But gravity has not stopped acting. That means the acceleration of the particle is still downwards. Therefore, the velocity now becomes downwards and the velocity now keeps on increasing, right? The magnitude of the velocity now keeps on increasing. The length of the velocity vector keeps on increasing because of the fact that the acceleration vector and the velocity vector have now become in the same direction. आया समझ में सबको? This is understood to all. Therefore, the diagram that I have drawn here, right? Therefore, the green line that I have drawn here. जैसे ही velocity और acceleration के direction opposite हो गए, मुझे मालूम है ये रुक जाएगा जाके कहीं ना कहीं, और रुकने के बाद ये फिर उल्टा होके वापस चलेगा, और हमें इस point पे इसके बारे में acceleration can change instantaneously. Okay, acceleration can change instantaneously. After all, you can kick your chair, or you can kick your table, or you can kick a football kept on the ground, or the batsman can hit the ball when the ball is thrown by the bowler. Why? What is happening here? Right? The instant the bat makes contact. Hey, tennis खेला है कभी? Tennis, have you played tennis? Tennis खेला है ना सबने? नहीं? हाँ? Tennis, table tennis, bat ball कुछ भी. तो बॉल तो बैट्समैन के तरफ जा रही है ना, फिर बैट्समैन ने जब बैट को घुमाया और जो वो बैट है वो बॉल के कांटेक्ट में आया, the moment the bat is in contact with the ball, the acceleration of the ball has changed, and now the velocity of the ball will become zero at some point of time, and then it will acquire a velocity in the opposite direction. It happens in a very short period of time, so you don't see it, right? But I will show you a video one day जहाँ पे दिखाई दे रहा है कि वो ball has actually stopped. Okay, so now acceleration तो निकालना पड़ेगा ना? नहीं, अभी नहीं दिखाऊंगा. अच्छा, मैं लिंक भेज दूंगा कोई ना कोई. So for the second part of the motion, right? What I am going to do is I'm going to write down the values of S, U, and A. चलो भाई, कौन बता रहा है मेरे को A का वैल्यू क्या होएगा सेकेंड पार्ट के लिए? A का वैल्यू होएगा -2, राइट? A का वैल्यू होएगा -2. वेरी नाइस. U का वैल्यू क्या होएगा फॉर द सेकेंड पार्ट? U का वैल्यू क्या होएगा? मैं यूनिट्स नहीं लिख रहा हूं, आपको यूनिट्स लिखना है. U का वैल्यू क्या होएगा सेकेंड पार्ट का? Very nice, yes. It will be U square is equal to 800. ये कहाँ से आया? Well, the first part का V, right? The first part का V, this becomes U for the second part. Right? First part का final velocity
is equal to the second part का, एक मिनट भैया साइलेंट कर लो मैं फोन को। अब the most important part, s की वैल्यू क्या होगी? 100 नहीं होएगी, that is what you have to realize. Yeah, this is what you have to realize. 100 नहीं होएगी, 0 नहीं होएगी, no. Look at the problem. Okay? Look at the diagram. Where is the initial point? Where is the final point? 100 plus 2x नहीं होएगा. You draw a vector from the initial point to the final point. हमारा initial point ये रहा I dash. हमारा final point ये रहा F dash. Draw a vector from the initial point to the final point. What is the length of the vector? 100. And what is the direction of the vector? Minus I cap. Therefore, what is the displacement of this vector? What is the displacement vector? Minus 100 meters. ये आया सबको समझ में? अब displacement भी negative हो सकता है, right? Anybody not understanding why s is equal to minus 100? Anybody not understanding why s is equal to minus 100? सबको clear है that s is equal to minus 100? Okay. So let's apply now. V square is equal to u square plus 2as. This is equal to 800 plus. हाँ भाई चिराग, क्या नहीं समझ में आया? बताओ मेरे को। चिराग, इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट समझ में आ रहा है सेकंड पार्ट ऑफ द जर्नी का? हाँ ठीक है, मेरे को यस और नो बोलते जाना, लिखते जा। सेकंड पार्ट ऑफ द जर्नी का इनिशियल और फाइनल पॉइंट समझ में आ रहा है? If I draw a vector from the initial to the final point of the second part of the journey, then what is the length of the vector? What is the length of the vector? What is the direction of the vector? What is the direction of the vector? प्लस तो ये होएगा ना, प्लस तो इधर है ना। ये वेक्टर जो मैंने अभी बनाया ब्लैक, ये प्लस है या माइनस है इसका डायरेक्शन? चिराग, ये जो मैंने अभी वेक्टर बनाया तो और ये वेक्टर का डायरेक्शन क्या होएगा चिराग? तो जो वेक्टर मैंने सेकेंड पार्ट ऑफ द जर्नी के लिए इनिशियल टू फाइनल बनाया उसका डायरेक्शन क्या है? हाँ अभी आया समझ में ना, माइनस 100 होएगा। नहीं, इट डज नॉट शो दैट। हाँ भाई, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट क्यों नहीं पॉसिबल है भाई? क्या हो गया है? यही जो 10th का 9th वाला बर्डन है, इसको आपको जो है इस बर्डन को कम करना है। Displacement can and definitely will be negative. So V square is equal to 800 plus 2 into A into S, 2 into minus 2 into minus 100. So V square will be equal to 1200. Therefore, V will be equal to how much?
V will be equal to how much? कितना आएगा? 20 root minus 20 root 3 meters per second. Right? Okay. हाँ, एक मिनट. सर जो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी वाला फॉर्मूला था उसमें t टाइम इंटरवल है ना, तो वो फिर हमेशा पॉजिटिव रहेगा ना? हाँ. ओके, क्योंकि थैंक यू हमने सर. इंटीग्रेशन किया था ना 0 to t. हाँ, एक सेकंड जोएब, एक सेकंड रुक जा. हाँ, बोल. सर इधर जो हम लोग v का से स्क्वायर रूट निकालते तो प्लस माइनस में जो आंसर आता है हम माइनस हाँ. इसलिए लेते हैं ना कि वो क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है तो उसको पीछे आना है. नहीं, वो माइनस इसलिए है क्योंकि जब वो ओरिजिन पे पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी या तो पॉजिटिव डायरेक्शन में हो सकती है या नेगेटिव डायरेक्शन में हो सकती है. हाँ, है ना? उसकी एक वेलोसिटी ही नेगेटिव पॉसिबिलिटी है डायरेक्शन ना? में रहेगी, वो मेरे को समझा क्योंकि वो हाँ. नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है और उसका हाँ. ठीक है तो उसका मैग्नीट्यूड बढ़े जा रहा है तो सेम साइन रहेगा, वो मुझे हाँ. समझा. बट हाँ. मतलब वो हम लोग मतलब समझ के ही कर सकते हैं ना, उसका कुछ फॉर्मूला से लेना देना नहीं है ना. मतलब फॉर्मूला में आंसर नहीं, प्लस नहीं, माइनस ही आएगा, फिर हमें इस वाले में नहीं है. बट अगर आप v इज इक्वल टू यू प्लस एटी करके करोगे ना तो अपने हाँ. आप आएगा नेगेटिव. ओके इस ओके. में नहीं है क्योंकि क्वाड्रेटिक हो गया ना, यहाँ पे v स्क्वायर यू स्क्वायर आ गया ना. हाँ हाँ हाँ, तो दो आंसर है. लेकिन जो लीनियर फॉर्मूले हैं उसमें 2 स्टेप लगेंगे लेकिन फिर नेगेटिव आएगा. ओके, थैंक यू सर. हाँ. और कोई क्वेश्चन और कोई डाउट नहीं? Okay, so remembering that what I have told you today, major points. Number 1, किसी भी वन डायमेंशनल मोशन के कांस्टेंट एक्सेलरेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स लेना बहुत जरूरी है. Okay? Without an understanding of initial and final points, you will not be able to solve the question. Number 2, initial and final points can only be chosen when the acceleration between the initial and final points remains constant. If the acceleration of the particle changes somewhere, then you have to divide the motion into parts based on the values of acceleration. Number 2, right? ये सब मैं लिख चुका हूँ ईश्वरजोत, अपने आप लिखना. पेन चला घर पे तो मिल मेरे को लॉकडाउन के बाद. Number two, and the most important thing that you should have learned today is that the displacement of the particle is a vector drawn from the initial position to the final position. And when we are dealing with one-dimensional motion, this displacement may be positive, this displacement may be negative. Okay? This will depend on where the initial and the final position of the particle are, and it will also depend on your choice of positive and negative directions. Now, in the questions that we did today, my choice of positive and negative directions were the standard ones, right? अगर मैंने x-axis लिया तो positive x-axis positive है, negative x-axis negative है. But you can choose it the other way around as well, right? As we will see in the next class, it will not make a difference as long as we are consistent with our directions, right? So first thing, initial final points between 2 points where acceleration is the same. Second, as long as the acceleration is same, you can choose initial final points anywhere in that motion. Third, the displacement vector can be positive or negative. So before putting the value of S into an equation, you have to think whether it is positive or negative.
right? And nothing beats understanding like practice. So there are a lot of questions in exercise 3, right? There are in-class examples which you have to do जिसके answers नहीं हैं, जो मैं बताऊंगा कि सही है नहीं है, और उसके बाद से उसमें ट्यूटोरियल है जिसमें आंसर्स आपके दिए हुए हैं. Please complete the lecture 3 all questions by Wednesday. Okay? Wednesday वाली क्लास में आने से पहले पूरा completed होना चाहिए. हाँ खुशी बोलो. Sir, I have a question. Like, when a particle moves in circular paths, like a clock example, the hands of the clock moves in a circular path. So there was a question in the test. So the like initial from initial and the change of velocity is from final to initial velocity. So here, so sir, can I read the question now? मेरी बात सुन, पहले मेरी बात सुन. हाँ. First, circular motion is two-dimensional motion. So whatever we are discussing here does not translate as it is into two-dimensional motion, right? उसके लिए हमें थोड़े से changes करने पड़ेंगे. ठीक है ना? हाँ sir. ये आया समझ में? और हाँ, sir. सर्कुलर मोशन में जब हम एक्सेलरेशन निकालेंगे तो फाइनल वेलोसिटी वेक्टर माइनस इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर डिवाइडेड बाय टाइम करेंगे. सर्कुलर मोशन में जब हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर करेंगे. हाँ ये आया तो सर जो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन में जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो हाँ. उसका जो आंसर है वो अलग आ रहे हैं. हम लोग आर्क का ले रहे हैं, आर्क का ये डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं. नहीं कौन से वाले में? सर्कुलर वाले में. हाँ सर. सर्कुलर वाले में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है तो जो भी इनिशियल पॉइंट है, जो भी फाइनल पॉइंट है, एक वेक्टर बना दो वहां से. हाँ सर, वैसा ही होता है. सर मैं एक बार क्वेश्चन बताती हूँ. सर दिया है कि लेंथ ऑफ सेकंड्स हैंड इज 1 सेंटीमीटर और 15 टाइम इज 15 सेकंड्स में चेंज ऑफ वेलोसिटी कितना है. सो जो डिस्प्लेसमेंट है वो इनिशियल टू फाइनल, तो हाइपोटेनस हो गया ना राइट एंगल ट्रायंगल का. क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना है? चेंज इन वेलोसिटी इन 15 सेकंड्स. Change in velocity, right? Change in velocity. What is change in velocity? vf minus minus v. vi. दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करना है ना. कौन से दो वेक्टर्स हैं जिनको सब्ट्रैक्ट करना है? देखो मैंने ऑलरेडी बना दिया है. हाँ सर, vf और vi. किसका हाइपोटेन्यूज लेना है? नहीं सर, जो vf होगा वो डिस्प्लेसमेंट जो होगा. डिस्प्लेसमेंट से क्या लेना देना है खुशी? Why are you bothered with displacement? सर ये vf vf है, हाँ ये सर. vi है, और अगर हमें चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर निकालना है तो surely it must be this, Yes sir. right? हाँ सर. इसका डिस्प्लेसमेंट से कोई लेना देना नहीं. ओके. ठीक है, हाँ सर. क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो ये रहा. हाँ सर, वही मैं बोल रही हूँ. Displacement vector upon time will give you what? It will give you the average velocity. It will not give you the change in velocity. The direction, the definitions are watertight. They have no place for ambiguous interpretation. If I am asking you for change in velocity, I am asking you literally for this vector minus this vector. Now, how you find this change, that is up to you. You can draw it graphically, then you can find it. You can use I cap, J cap, and you can find it. जैसे करना है आपका. लेकिन
चेंज इन वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट का कोई रोल नहीं है. Okay. एवरेज वेलोसिटी मैंने पूछा तो वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो जाएगा. इसमें ये जो रेड वेलोसिटी वेक्टर्स हैं इसका कोई रोल नहीं आएगा. आया समझ में जो मैं बोल रहा हूँ? सर बट हम VF निकालेंगे ना सर जो. VF निकालेंगे, क्यों निकालेंगे भाई? VF तो हमें गिवन है ना. हमें तो नहीं क्लॉक का, अरे क्लॉक के हैंड का वेलोसिटी आपको नहीं मालूम है क्या होता है? क्लॉक के हैंड के टिप का, क्लॉक के हैंड के टिप का वेलोसिटी तो हमें मालूम है ना क्या होता है, हाँ हाँ सर. राइट? यहाँ पे VF बिल्कुल नहीं निकालना है. नो, यहाँ पे VF गिवन है, VI गिवन है भाई. अल्टीमेटली VF है क्या? वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द टिप ऑफ द हैंड, राइट? हाँ What do we सर. know about the velocity vector? Well, we know that the direction of the velocity vector is always tangential to the path of the particle. And what is the path of the particle located at the tip of the hand of the clock? What is the path of the particle located at the tip of the hand of the clock? It is circular. Therefore, the velocity must be tangential to the circle, right? Yes sir. And the magnitude of the velocity vector must be equal to the speed of the particle, because we are assuming that the speed of the particle which is located at the tip of the hand remains constant. तभी तो वो घड़ी है, नहीं तो घड़ी नहीं होती वो तो. फिर 1 मिनट तो अलग अलग ड्यूरेशन का हो जाता. So now I know that the speed of the particle is distance traveled upon time. And what is the distance traveled by the particle at the tip of the hand of the clock? It is 2 pi r. मैं तो एक गोल चक्कर के लिए लेके चलूंगा. Divided by कितना टाइम लगता है एक गोल चक्कर खाने में एक सेकंड हैंड को? 60 seconds. Right? Yes sir. So 2 pi r divided by 60 seconds gives me the speed, which is the magnitude of the velocity vector, and the tangential to the circle gives me the tangent to the circle gives me the direction of the velocity vector. Now, where does your confusion arise from? Your confusion arises from the fact that you can find the velocity vector given the initial velocity vector of the clock hand. And the answer is no, you cannot, because of the fact that you don't know the acceleration vector. To find the velocity vector final given the initial velocity vector, you must know the acceleration vector, not the displacement vector. Okay sir. लेकिन यहाँ तो एक्सेलरेशन नहीं गिवन है ना, ये तो हम बाद में हाँ. वर्कआउट करेंगे, क्योंकि सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है. इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है कि हम उसके लिए अलग से चैप्टर ही बना के रखा हुआ है सर्कुलर मोशन. अगर आप HC वर्मा की बुक हाँ खोलोगे सर. तो उसमें सर्कुलर मोशन ही चैप्टर अलग से आएगा. ठीक है ना? ओके, हाँ सर. आई होप दिस क्लैरिफाइज योर डाउट्स. Yeah. ओके, गुड. चलो, सो आई विल सेंड ऑल दीज स्लाइड्स अक्रॉस. हाँ बताओ आर्यन, एक मिनट. हाँ, फाइनल वेलोसिटी वेक्टर नेगेटिव हो सकता है. क्या हुआ भाई आर्यन? मैंने तेरे को वो किया, भग लिया. एक मिनट रुक. मटेरियल सेंटर पे पड़ा हुआ है. इफ यू वांट, I think lockdown is initiated again, right? Fully lockdown has been initiated again. But if you talk to Joy sir, if he's coming to the office, then you can, or your parents can, you cannot go to the center and get the material. Okay. नया डिवाइस क्या है? फोन पे ही है ये. चलो, ओके.
हाँ 13 जुलाई तक फिर से लॉकडाउन है ना। एक मिनट रुक भाई, अब क्या हुआ शिवेन? सर मेरा डाउट था कि अगर यू स्क्वायर 2s से छोटा हो गया तो मतलब हाँ क्या हुआ? यू स्क्वायर जो है उसका मैग्नीट्यूड 2s से छोटा हो गया तो मतलब और एक्सेलरेशन नेगेटिव है गिवन एक्सेल। हाँ तो ये पॉसिबल नहीं है ना, यू कैनॉट गेट कॉम्प्लेक्स वेलोसिटीज, this that situation will physically not be possible. सर रीजन हाँ सर मैथमेटिकली तो समझ गया कि पॉसिबल क्यों नहीं है बट मैथमेटिकली, हाँ मैथमेटिकली पॉसिबल है, फिजिकली पॉसिबल नहीं है। अगर आपके पास वेलोसिटी इक्वल टू अंडर रूट -20 आ रहा है तो फिर ये पॉसिबल ही नहीं, हो ही नहीं सकता, अच्छा है ना, फिजिकली इम्पॉसिबल। चलो ओके, आई विल सी यू थर्सडे तक देना है होमवर्क। हाँ वेडनेसडे तो नहीं क्लास होती है ना, थर्सडे से पहले, थर्सडे वाली क्लास से पहले प्लीज गिव मी द होमवर्क and please read lecture 4 before Thursday's lecture.